So let's start with today's class. This way, the very first thing is we will revise what we have learned. Okay. So the very first thing is function हमने सीखा. Okay. So function का एक quick example I would like to give you. So consider this as a quick yield का नहीं return का देते. ठीक है. So this as a quick example जिसमें what we have done is function का एक quick हमने एक फंक्शन डिफाइन करा है जिसमें उसका नाम दिया है इवन नंबर देन वी हैव एडेड अ पैरामीटर. ठीक है, इसके ऊपर हवर भी करोगे ना तो इट विल से पैरामीटर एंड वी कैन ऐड नंबर एनी नंबर वी कैन ऐड. ठीक है, इवन कोड दिस VS code itself will guide you in like most of the cases here also. ठीक है, so here we have added we can query with one number, right? This is the code like your expression, you can say expression as in formula or anything which is related to the logic. Okay, code logic. And the other thing is a skeleton where we are using return statements to return what we are getting. Okay, so this is the formula and this is the function calling. Okay, so we have learned this, and in this expression we can have any complex expression. So in order to like what you want out of the code, you can add that difficult expression in it. Otherwise, the return method is same, defining a function is same, and calling a function is same. Somewhat sorry, somewhat new things that we have learned here is setting a parameter. So there are four types of parameters. Okay, what four types of parameters we have seen? I think that's in some another file. But we have seen uh, first is default parameter. The first is positional parameter. Second is default parameter. I think we can find that. No, it has to be here somewhere. Yeah. The first is positional parameter. Second is default. Then the arbitrary and the keyword argument. So default parameters क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ you can like add parameters like this. Positional arguments में default में you can add parameters but also assign a value to it. ठीक है? So this D1 is called as default parameter. Then there is the arbitrary parameter. So what is arbitrary? So when you don't know, when you don't know how many parameters that we want to pass. Okay, when we don't know how many parameters that we want to pass, right? So then we use args, and keyword args is similar, but it is related to this default one. Why? Because it's like this, जिसमें कीवर्ड आर्ग, जिसमें क्या होता है कि चलो एक एक का एग्जांपल ले लेते हैं. सो दिस इज अ पोजिशनल आर्गुमेंट वेयर वी हैव डिफाइंड पैरामीटर्स डायरेक्टली, राइट? जो जितने हैं उतने ही पास करने होंगे, कम नहीं ज्यादा नहीं. ठीक है, वी हैव टू पास 4 हियर बिकॉज 4 वर आस्क्ड. ठीक है, we cannot pass 5, we cannot pass 3, we cannot pass 1 2. Then we have seen this default one you can pass the other 3, and fourth is already default, like default uh, given, default parameter given. You can have 1 2 or more also. Okay, then if you pass the same values, so if you pass for the other default variables also, it overrides the values. Okay, it overrides the value. Then you cannot pass something like this. You need to pass positional argument first, then default argument. Then and we have seen this args.
when you don't know how many parameters you are going to pass. So if you directly say arc and if you pass n number of parameters, it will accept it. Yeah, it accepts n number of parameters. Then there is this example. So we have also seen the sequence, right? So first is should be a positional, then a default one, then argument, arbitrary. Okay. So A will be consumed by this one, B will consume this four, and ABC will consume rest of it. Like okay, rest of it. Then we have seen this X consumed this. Okay. Then this Y, basically Y was 111, right? Because ABC consumed everything else. Okay, ABC consumed everything else, like from here to here. Yeah, from here to here. Then there is this. You cannot have something a parameter like this because ABC consumed everything. ABC consumed everything, and we short of parameter for X. X के लिए कुछ बचा ही नहीं. ठीक है, that's why we got this error. Then we were talking about keyword arguments. Keyword arguments में क्या आता है? So these are all default arguments, right? But what if there are you don't know how many default arguments are there? You don't know how many default arguments are there. Arbitrary में क्या था? You don't know how many positional arguments are there. Similarly, keyword arguments में the thing is you don't know how many default arguments are there, and it will catch all those things. So one more thing that we have learned is in arbitrary, whatever the output we were getting was a tuple. Was a tuple. Tuple means anything which is inside a parenthesis or round braces and separated by comma. But in keyword arguments, we got a dictionary, right? Dictionary, because these are like a default. So it is keyword arguments is more or related to default arguments, and default arguments are in a pair of key value pair, and it is handling it well, a dictionary. So this is how we have seen. So this is a sequence that we have yesterday learned, right? And some examples that I have given related to that only. So here somewhere this is also a valid dictionary, a valid sequence, but I need to look into it. So I haven't looked into it yet. And the other thing that we have learned is recursive function. Okay. Other thing that we have learned is a recursive function. Recursive function क्या होता है? A function which calls itself. Okay. A function which calls itself. ठीक है. Recursive function होता है function which calls itself. तो हमने ये sys यानी system function यूज करके we got to know कि recursive function की लिमिट क्या होती है. So this अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, जैसे AI कॉल मैंने किया, ठीक है, AI कॉल is printing something and again calling itself, then it will again print something, call itself, print something, call itself, print something, call itself, and it will go on, right? But there has to be some break, right? Otherwise it will like go on for infinity. ठीक है, हम खत्म हो जाएंगे लेकिन कॉल वो खत्म नहीं होगा. So that is why programmers gave a limit for 3000. Sometimes you in some ID there are 1000 kilometer, 2000 kilometer, okay? And you can also set up by yourself. You can also set up by yourself. इस 1000 का ही चाहिए 10,000 का लिमिट थी, ठीक है. So here is a visual representation, a function which calls itself, a function which calls itself. Then we have seen for factorial a very famous question from the interviews कि factorial find करने के लिए recursive function give us a recursive function, ठीक है. So we have seen these, what is factorial, and this is the simplest expression for calculating it. What is it? The first is we have defined, okay. Second, we know if n का value 0 है and 1 है, so we should return 1, right? Yeah. If n का value 0 है 1 है, we should return 1.
The second thing we know is whatever value we specify उसको like अगर मैंने मुझे 4 का फॉलो कर अगर मुझे if I want a factorial of 4 if I want a factorial of 4 it is nothing but 4 into 3 factorial ठीक है 3 factorial looks like this so it is nothing but 4 into 3 factorial similarly 3 का भी क्या है it's nothing but 3 into 2 factorial ठीक है 2 का भी similarly 2 into 1 ठीक है so it means whatever function I make whatever function I make it is nothing but that particular element that particular number into so 10 is 10 into 10 minus 1 that is 9 ka factorial then again 9 and then it goes on okay so this is how we were able to find n and a factorial of 10 okay a factorial of 10 then this is the same thing I guess it is function 1 a plus b returns function a plus b so this is a um, simple function only it is not a recursive one ठीक है it is not the recursive one so this is like again factorial के लिए code ठीक है it is again similar and if n is 1 or less than if n is 0 or less than 0 return this does not exist if n is 1 return 1 otherwise this is the one of the formula for factorial n into the same function that we have defined into n minus 1 ठीक है n minus 1 that is how like in this formula you can run anything like if you don't really have this also but ये भी चाहिए रहेगा क्योंकि 0 and 1 का वैल्यू भी हमें आगे जाके लगेगा ठीक है then we have seen for creating for Fibonacci also so I have explained this Fibonacci के लिए ये formula रहेगा कि n minus 1 plus n minus 2 ठीक है and ये similar है similar like recursive function so these all classical things like Fibonacci हो गया या factorial हो गया या similar frameworks like this जो mathematical terms है those are defined by some formula that you may have to remember ठीक है क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते तो you have to remember this formula otherwise the logic to same है you are defining a function you are writing a expression you are returning something and you are calling something ठीक है you are calling something तो otherwise तो expression तो same है जो बीच का जो फॉर्मूला है like this formula in this case और like जो कोड रहेगा ठीक है expression रहेगा that has to be changed so on that matter like functions function one part one part two अगर सबको समझ में आया है so you will easily understand today's क्या यार 2.2 तो नहीं लगा this is entirely function का ही पार्ट है 2.3.1 कर रहे हैं 2.3.1 you will entirely understand this lambda function okay, in Python dot ipynb so if you have understood these two files okay, and if someone has practiced these two files उसको lambda function easily आ जाएगा उसको lambda function easily समझ में आ जाएगा so now the thing is you have to practice more right क्योंकि सारी चीजें जो हमने सीखी है वो सारी चीजें अभी लगने वाली है हमें ठीक है going ahead if you learn lambda or if you learn numpy pandas oops function regular expression like these four things remained in related to coding तो बाकी तो फिर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग ही है so that is like a very simple चीज है बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए आगे जाकर but in terms of coding
तो बाकी के क्या क्या चीजें बची है हमें, सबसे पहले है लैम्डा। लैम्डा फंक्शन, इसको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा क्योंकि इसका मिनिमम वन क्वेश्चन इंटरव्यू में रहेगा एंड आपके डेली लाइफ के कोडिंग में यू कैन यूज इट वेरी इफेक्टिवली, ठीक है। तो इट इज लाइक सिमिलर टू द फंक्शंस, ठीक है। ये जो फंक्शंस है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट, बट जो लिखने का स्टाइल है, जो सिंटैक्स है, दैट इज समवॉट डिफरेंट, ठीक है। सिंटैक्स समवॉट। उसके बाद क्या सीखना है हमें, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन को रेगेक्स भी कहते हैं। देन वी वांट टू लर्न numpy, ठीक है। numpy मतलब ये एक फॉर्म, एक मैथ्स रिलेटेड लाइब्रेरी है, pandas. So this is also math or excel related library. So these two are, or these three are related to data science, ठीक है। डेटा साइंस लाइब्रेरी, ठीक है। These three are data science related libraries. This lambda and oops are related to Python. Like सभी Python की libraries है. This is also Python based library, Python based library, Python based library. But or one more thing, Python में there are number of new libraries also. There are like famous more libraries. Day by day, every day new libraries are coming. ठीक है। तो वी कैन नॉट लर्न ईच एंड एवरी लाइब्रेरी, सो उसको बस सीखते सीखते हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, बिकॉज एवरी वन इज डेवलपिंग न्यू लाइब्रेरीज बाय देमसेल्फ, बट आई हैव taught you enough to understand all those other libraries also, ठीक है। why we are covering these libraries, because these are more of related to data science, ठीक है। these are more of related to data science. तो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन रहेगा। पांडास पे 200% क्वेश्चन रहेगा, नंपाई पे 200% क्वेश्चन रहेगा। देयर आर रेयर चांसेस कि रेगुलर एक्सप्रेशन पर भी रहेगा, ठीक है। बट इन पे, ये दोनों पे तो 100% रहेगा। ऊप्स पे 100% एक क्वेश्चन रहेगा, लैम्डा पे 100% एक क्वेश्चन रहेगा, एंड फंक्शन पे भी। So this is the roadmap for I guess lambda will take 2 days, ठीक है। क्योंकि इसका अभी आधा घंटे में शायद मोस्ट ऑफ मैं कवर कर लूँगा कल। ये लेगा 1 डे, 1 डे। दिस विल टेक 3 days, दिस विल ऑल्सो टेक 3 days, डिपेंडिंग हाउ स्मार्ट यू आर टू अंडरस्टैंड। तो आई गेस 4 days लगेंगे। इसमें तो ज़्यादा लग सकता है, बिकॉज दिस इज वेरी बिग लाइब्रेरी, नंपाई भी बिग है, ठीक है। तो मोर और लेस पाइथन हमारा 3 days में खत्म हो जाएगा। देन ये कितना हो रहा है, 7 5, तो 13 days, ये 12 days ये भी हो रहा है। तो 12 days में ये लाइब्रेरी, तो 12 days प्लस 3 days, 15 days, लाइक 2 weeks में वी विल बी कवरिंग एंटायर पाइथन, ठीक है। तो आई थिंक मिड मे के अंदर वी विल कवर ऑल दिस, ठीक है। मिड मे के अंदर वी विल कवर all these things, and if you are like, if you know all these things, okay, if you know all these things, you are set for finding a job, okay, you are set for finding a job as a Python developer, developer, okay, as a Python developer you are set for finding a job, ठीक है। So let's start with this lambda, let's start with this lambda function. So what is lambda, ठीक है। So lambda function is, lambda the function is also called as anonymous function, anonymous function. So basically this function does not have a name. It is also called as a function, a function without name, ठीक है। It is defined as lambda keyword, and here we do not need to return or yield
ठीक है. So this is also called as shorthand function. Shorthand function. Okay. So these are the nodes. These are the nodes. Let's learn why, like what these nodes say. Okay. Let's learn what these nodes say. So what first thing I have written is lambda is called as anonymous function. So ये एक इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है. Like which function is a anonymous function. ठीक है. Interviewer will ask you which function is an anonymous function. So you should remember lambda is an anonymous function. Otherwise, then there will be another question कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका नाम नहीं लिखा जाता. जैसे let me just give you one example. So let me just create an example like square find करना है मुझे. ठीक है. Square find करना है मुझे. For example n का, n as in number. So what I will say return, ठीक है, n to the power 2. ठीक है, right, and I will call this function square किसका फाइंड करना है मुझे 10 का. So I will get a value as 100, right. So यहाँ पर मैंने क्या किया, I have defined a name. Okay, I have defined a name of a function. But in lambda you don't have to define a function name. ठीक है, you don't have to define a function name. You have to define a defined as lambda keyword. Lambda as a keyword. So let me just convert this same example into lambda. ठीक है, lambda function. तो कैसे रहेगा, I want to find a square, right. So मैं sqr नाम से एक variable ले लेता हूँ. So I have taken a variable named as sqr. ठीक है. So let me just convert this one into lambda. Okay. So what next I will do? I will use this lambda as a keyword. Okay. Then I will say n. So this is n, right? So whenever you want to define a function in lambda, you just say lambda. Okay. Then you define a variable. Okay. तो यहाँ पर ये n था, मैंने यहाँ पर n ऐसे लिख दिया. So here if there are multiple values like n, m, है ना, j, k, something like that, you can also define here n, m, k. ठीक है, similar. So we don't really have to define it here. So let's keep it like this. So I've said n. ठीक है. उसके बाद your expression will be there. What is the expression? This is the expression, a formula to find a square, right? N to the power square. So that is it. इतना ही है. तो इस ये पूरा जो है it is what it is. इतना लिखने से इसका काम हो जाएगा. And then what you will say, square. ठीक है, स्क्वायर में 10 डाल दो. ठीक है, 10 का ठीक है. ठीक है. So if I run this, I will get 100 as output. So what basically happened here? So this n का वैल्यू स्क्वायर है ना, इस n का वैल्यू जो 10 है स्क्वायर का, वो चले गया इस n में. ठीक है, बेसिकली ये n का वैल्यू इधर जाता है, राइट, इसमें. तो यहाँ पर चलेगा. देन इट हैज बीन कंसिडर्ड इन द फॉर्मूला. जो कोलन, जो यहाँ पर कोलन है, राइट, यहाँ पर कोलन है, यहाँ पर कोलन है. इस कोलन के बाद जो भी रहता है दैट इज द एक्सप्रेशन. उसमें वो n की या फिर जो भी पैरामीटर्स है उनकी वैल्यूज आएगी. कैलकुलेशन होगा, वॉट एवर द आउटपुट इज वी विल गेट. ठीक है, दिस इज हाउ सिंपल इट इज. ठीक है. सो व्हाट इज द सिंटैक्स हियर? सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ऑफ लैम्ब्डा. ठीक है. तो फर्स्ट क्या रहेगा? लैम्ब्डा वर्ड रहेगा. ठीक है. तो फर्स्ट रहेगा लैम्ब्डा वर्ड लाइक दिस, लैम्ब्डा वर्ड. देन उसके बाद रहेगा आपका आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स यानी these can be positional, also default, arbitrary, and what was the last? Keyword argument. ठीक है. So this n is this simple. So don't worry if you are failing to understand this, but I will make you understand by giving you number of examples. ठीक है. Other syntax में क्या है? First है lambda. Okay, lambda you have to define. Then arguments, that is n. Then there is a colon. ठीक है. Then there is a colon.
and then you have to add expressions. एक्सप्रेशन ठीक है, एक्सप्रेशन यानी ये, ठीक है, एक्सप्रेशन यानी ये। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या रहेगा? ऑपरेशन ऑन ऑन द आर्ग्यूमेंट, 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 लाइक इस आर्ग्यूमेंट जो भी हमने डिफाइन करा, एंड जो भी हमने डिफाइन किया, उसके ऊपर कुछ तो ऑपरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। ठीक है, लाइक इन हियर ऑल्सो, कुछ भी ले लो, है ना, इधर पकड़ लो, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। ठीक है, एक कोड हो गया आपका। दिस इज ए दिस इज ए ऑपरेशन ऑन ऑन योर पैरामीटर्स, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट्स, इसको आर्ग्यूमेंट्स कह लो, पैरामीटर्स कह लो। तो इट इज सिमिलर। ठीक है, इसको इसको भी अगर मुझे लैम्डा में कन्वर्ट करना रहा, तो हाउ विल आई डू इट? पहले तो ये तो समझ गया, राइट? ये चीजें तो समझ गई, ठीक है, समझ गई या नहीं आई डोंट नो, लेकिन लेट्स सी। तो ये कैसे रहेगा? लैम्डा, ठीक है, लैम्डा फिर ए, फॉर एग्जांपल ए, फिर मैंने एक सेमीकोलन दे दिया एक्सप्रेशन के लिए, आई हैव सेड ए टू द पावर 2। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल इसका, लैम्डा का। और एग्जांपल दे दो लैम्डा, देन फॉर एग्जांपल ले लो ए कॉमा बी। ठीक है, दो पैरामीटर्स आई वांटेड टू पास, देन व्हाट आई हैव सेड a प्लस b। ठीक है, so this is another example। ठीक है, तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, and this is what, so let's start with like more examples that I will give you। ठीक है, ठीक है, तो इसको इसको एक शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है, व्हाई शॉर्ट हैंड मैंने यहाँ पर लिखा है, शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन, because this function, defining a function, calling a function, returning a function, इसको, this is a big function, right? This is a big thing, like लंबा है, right? बहुत big code you have to write, but वो सारा चीज एक सिंपल लाइन में ही खत्म हो गया। ठीक है, so that is why it is called as short hand। ठीक है, short hand expression, ठीक है, short hand expression। तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल lambda। so for example you don't want to, you know, define in a para और इन अ वेरिएबल, इधर नहीं, डायरेक्टली मुझे 9 का स्क्वायर चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या करा मैंने यहाँ पर? तो एडेड अ फंक्शन इन द टपल, ठीक है, एंड देन एडेड आस्क क्वेरी इन द टपल। इफ आई रन दिस आई विल गेट 9 स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर। व्हाट हैपेंड हियर अगेन? दिस 9 वेंट हियर, देन n का वैल्यू, एंड n का वैल्यू इधर गया, लाइक n स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द सिंपल थिंग, दिस इज द सिंपल थिंग। तो वन मोर एग्जांपल लेट मी गिव यू। ठीक है, पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन लेट्स से समेशन। समेशन में आई वांटेड टू पास ए एंड बी। ठीक है, सिंपल है, ये चीजें हमने सीखी है, राइट? ये चीजें हमने सीखी है, तो यू कैन से रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, देन व्हाट वी डू इज वी से समेशन ऑफ 5 कॉमा 4, 4 कॉमा 5, तो इन दोनों का एडिशन हमें मिल जाएगा, राइट? लाइक दिस। so similarly you can create like this, summation variable हो गया, then I have added a lambda, then a comma b। ठीक है, then colon दे दिया, then I said a plus b। ठीक है, and then summation में calling, like उस function को कॉल करने से I have said 4 comma 5। ठीक है, 4 comma 5, then what will happen is 4 यहाँ पर चले जाएगा, 5 यहाँ पर चले जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, एंड वॉट एवर द आउटपुट इज वी विल गेट इट। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। एवरीवन गेटिंग दिस? एवरीवन गेटिंग दिस? डायरेक्टली रन हो जाएगा क्या? रन करके बताए। यस, डायरेक्टली रन हो जाता है। मतलब बेसिकली whenever you will run the cell, it will get ये तो क्या, आवाज ही नहीं आ रही। Anyways, if you have got this, type yes in the comment.
if you have got this, तो नहीं भी समझे तो हम और बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे इसके, बट स्टिल इफ यू हैव गॉट दिस somewhat somewhat, it's 2 years तो आ गए guys, 3 years, wait, some more, इतना क्या ही दिया है, तो you know when you say yes, then I will give you example, ठीक है, to solve, in order to check you whether you are saying right or wrong. So I am creating a variable called as add, ठीक है, I am creating a variable called as add, और जिसमें I am saying instead of that, let me give you a function, ठीक है, uh, उस फंक्शन को, so similarly I will give you a function like this, you have to convert it into a function, a lambda function, ठीक है, this is your job right now guys, ठीक है, तो सिंपल है, सबसे पहले I am saying def add, ये मेरे फंक्शन का नाम है, I am saying a comma b comma c, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, यहाँ पे 2 ही थे, मैंने 3 कर दिया, then I am saying return a plus b, return a plus b into c, ठीक है, what I have said कि a and b का एडिशन कर लो और उसको c से मल्टीप्लाई कर लो, and then I am asking this 3, 4, 5, ठीक है, so I am getting an output of something like 35, ठीक है, 35. Now your job is to convert this long function into a short function. Now your job is to convert this long function into a short function. So start हो जाओ. Everyone, you have 1 minute. ठीक है? Syntax आपके सामने रखता हूँ. So this is the syntax. Anyone? Time is running. We have this syntax. Someone said add lambda abc and this. So this is right. So time is up, guys. ठीक है. So let me just paste this here. Let me just paste this here and let's check. So yes, this is right. Okay, this is right. So what is the logic here? What he does, simple है, right? इसको ही rearrange करा है. So what he has done, इसको ही rearrange किया है, right? So this ABC goes here. Okay. We have created a add नाम से एक variable, ठीक है? ये add था, अरे यार खराब ही करते हैं. So we have created add नाम से एक variable, ठीक है? उसके बाद lambda keyword that we have to use, then define these 3, ये 3 चीजें यहाँ पर define होगी, then this formula goes directly here and we call the function, ठीक है? Simple है. So let me just give you the same example. But here what I am doing is, here I am saying c equals to 10. Yeah, c equals to 10. So what happened here, guys? So what basically happened here? It's the same function, but you can see now these are positional arguments. Which one? A and B are positional argument, and C is now a default argument. Okay. So here C is default argument. Okay. C is default argument.
So we have seen, right, positional argument, default argument, arbitrary and all those things. So if I run this, I will get what? 70. How? So A का वैल्यू आएगा 3, B का वैल्यू आएगा 4, और C का वैल्यू 10 है, राइट? एंड दिस ऑपरेशन विल गो ऑन, A प्लस B क्या होगा? 7 into 10, 70, right? Right? Got this for default arguments, right? So अगर मैं simple, we have seen one more thing, right? What thing we have seen is कि अगर मैं default value में, if default value जो भी रहेगा उसमें अगर मैं वैल्यू पास करता हूँ, so if I pass this value as 3, तो C का जो वैल्यू है that should get overwrite, right? And you can see that got overwrite. Overwrite as in जो 10 हमने पहले डिफाइन किया था, तो whatever 10 that we had defined, now that has been replaced with 3. Now that has been replaced with 3. So everyone got this. सिंपल है, क्या कर रहे हैं हमने? बस जो पोजिशनल आर्गुमेंट थे ये वाले, उसमें बस एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट डाल दिया, राइट? So it is that simple. So now what I will do is I will go and like for format the same है, ठीक है guys, format the same है, but I will just change this expression to a somewhat a difficult level, so that you also understand कि ये चीजें कुछ कर सकते हैं हम और भी, ठीक है? थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट चीजें अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं. So there is this function, ठीक है? तो इसको हमको पहले डिफाइन करना होगा. So there is a function called statistics. Statistics कहाँ पर है? यहाँ पर. Import statistics as SC, ठीक है? तो statistics नाम से एक एंटायर लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उसके अंदर मीन है, मीडियन है, मोड है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? Then you can see what happened here. तो इसको मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है? So there is a thing called मीन, ठीक है? मीन यानी मीन कैलकुलेट करना. मैथ्स में वी हैव कैलकुलेटेड मीन. So let's say I have taken an example of A equals to 2, B equals to 3, and C equals to let's say 10, ठीक है? 2, 3, 10. So I want to find a mean, ठीक है? So what I will do, I will say x equals to st dot mean. So this is a function, ठीक है? तो ये numpy में भी सीखेंगे हम, so don't worry about this. So इस mean function को यूज करके you can find the mean of the number. तो mean क्या रहेगा? a, b, c, ठीक है? Now if I ask for x, I will get mean as 5, ठीक है? mean यानी mean का क्या होता है? फॉर्मूला पता होगा आपको कि ऑल 3 नंबर, ये तीन नंबर डिवाइड बाय 3. अगर ये 4 नंबर है तो डिवाइड बाय 4. इनका तीनों का एडिशन एंड देन डिवाइड बाय 3. तो इनका ऐसे रहेगा 2 प्लस 3 प्लस 10, ठीक है? 2 प्लस 3 प्लस 10 एंड डिवाइड बाय 3. तो इसको मैं रन कर दूंगा तो इट विल बी 5.5 आ जाएगा, राइट? सो दिस इज also can be solved by this mean function, okay? This mean function we can also solve the same thing using mean function, ठीक है? So now I want you to think कि इसको मैं कैसे एक लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? Somewhat you have to think here कि now उसको मैं कैसे लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो start doing it. सबसे पहले क्रिएट अ वेरिएबल, लाइक कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो. यू हैव टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी, ठीक है? तो यू हैव टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी एंड स्टार्ट डूइंग इट. तो दिस इज जस्ट एक्सप्रेशन दैट आई हैव गिवन, ठीक है? ये बस एक्सप्रेशन है जो मैंने दिया है आपको. नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ कि हाँ आई हैव टू कम अप विद द वेरिएबल नेम, देन आई हैव टू फॉलो द सिंटैक्स. सिंटैक्स में क्या है? देन आई वी फर्स्ट यूज लैम्डा, then
put some parameters there. So parameters कौन से है इसमें that I have to see. Then I have to add a colon. Then I have to add expression, and then I have to call that or call that variable. Okay. So start thinking on it. How you can do it. Okay. So you have a time of 1 minute. So 8:47 and 49 तक 2 minutes you have. Okay. 2 minutes. Vishaka has come up with something. Okay. इसमें ये पिछले okay this is also right. This is wrong. Okay, ये गलत है. यहाँ पर सिर्फ you have to pass the value. So let me just explain you. So this is just a expression. ये formula है. ठीक है. और वो a plus b plus c divide by 3. तो इसको parenthesis में डालना था. Bracket में डालना था. So this is somewhat right. I will make it more correct. So try to think of this. इसको यूज करो. ठीक है. इस मीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया. दिस मीन का फॉर्मूला ट्राई टू यूज दिस मीन एज इन फंक्शन. ठीक है. ऑल्दो ये भी राइट है जो तुमने यूज करा, बस यहाँ पर ये पैरेंथेसिस डालने के लिए. ठीक है. एनी मोर लास्ट 1 minute रिमेन. लास्ट 1 minute. What else? So this is your expression. ये expression है. ठीक है. To us say x lambda or abc st abc and then you need to call it. So this is somewhat right. ठीक है. And the time is over, I guess. So let's start with Vishaka's answer first. ठीक है. Prashik also says ठीक है. Prashika and Vishaka's answer right. ठीक है. Same. So let's write with this first. So here this is for this one, not for the this one. ठीक है. इसके लिए नहीं है, इसके लिए लिखा गया है. Whoever has written. So very first thing is you don't want this parenthesis here. ठीक है. You don't want this parenthesis here. You want these parenthesis here. क्योंकि यहाँ पर यूज करें हमने, है ना. अगर ये c/3 रहा तो इसको c by मतलब अगर ऐसे रहा तो what will happen is x का और ये गलत है. ठीक है. ये गलत है. तो you need to pass like this 2, 3, 4. यहाँ पर you will be passing the parameters. So what will happen now if I keep like this? a का वैल्यू 2 जाएगा, b का वैल्यू 3 जाएगा, c का वैल्यू 4/3 जाएगा. तो 4/3 क्या होगा? 4/3 रहेगा समथिंग 1 point समथिंग. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा? ये 5 plus 6 point something आंसर आएगा. ठीक है. If I run this 6 point something आंसर आ गया. राइट. बट what we actually want is अभी और एक मैं उठा लेता हूँ. किसका उठाया था? यहाँ पे इनका उठा देता हूँ. So this is why somewhat correction is needed. ठीक है. तो यहाँ पर लैम्बडा चाहिए. ठीक है. लैम्बडा के बाद a, b, c देन कोलन रहेगा. अदरवाइज एवरीथिंग इज राइट. सो इफ आई नहीं st मीन नहीं, st मीन इज अ फॉर्मूला. st मीन इज अ फॉर्मूला. ठीक है. So now x is a variable and I'm calling this. So abc और यहाँ पर ये parenthesis देते हैं. So what will happen now? अभी सेम 2, 3, 4 ले लेता हूँ. ठीक है. मैं 2, 3, 4 ले लेता हूँ for you to understand. 2, 3, 4. So now what happened here? 2 यहाँ पर चले जाएगा, a में, b में 3, c में 4
और फिर पहले इनका एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पर वो ये ब्रैकेट है, एडिशन के बाद डिवाइड बाई 3 होगा. So 2 plus 3 is 5, then 5 plus 4 is 9, 9 by 3 will be 3. Okay. So 3 will be the answer. So this how different is. The third answer that we have got is from SWOT. Okay. So this is more of a related to इसके related. Okay. So if I run this and if I call x into 2 comma 3 comma 4, okay, 2 comma 3 comma 4, so it should also give me output as 3. Okay. So we got output as 3. So यहाँ पर what he does, x का x नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करा, then he used lambda, then abc as 3 parameters, then this is your expression. ठीक है, so st dot mean is your expression, then x को बस कॉल किया है, this x को कॉल किया. So you two of you have solved for this expression which is again right. Okay, so ये यहाँ पर थोड़ा parenthesis चाहिए, this is also right, but and this is similar, like ये मैंने क्यों दिया था, why I have given this, this is just an example of this mean function, this mean function का ये example है. So you are getting there, ठीक है, you are getting there. So let me just give you a similar function, similar चीज, but I am giving you a round function also. Round function हमने सीखा था, right? For example, hmm, एक मैं फंक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसी का, ठीक है, इसी का फंक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ. तो आई एम सेइंग गेट मीन, ठीक है, उसमें आई एम पासिंग ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड आई एम सेइंग st dot mean ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, st.mean ए कॉमा बी कॉमा सी, and I am just calling this function get mean 2 comma 3 comma 4, 2 comma 3 comma 4, ठीक है. So this is again similar to this, सही है. If I run this, I should have got something. क्योंकि मैंने कुछ रिटर्न नहीं करा guys, ठीक है, so I should have written something. तो मैंने कहा return x, return x, जो x small size का है, ठीक है, ये x ने स्टोर करा वैल्यू and x I'm returning. So now I'm getting 3 as a output. But what I am doing here is instead of 3 I want something. ठीक है, so the same thing, ये same चीज है, but now I want only 2.66. I don't want 2.66666665. ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक राउंड में, राउंड फंक्शन में ऐड कर दूंगा. ठीक है, राउंड ऑफ कॉमा 2, ठीक है, अराउंड 2. So if I run this, I will get, अरे यार ये तो अलग आ गया, क्यों अलग आया, 3,2 क्यों आ गया ये, this is entirely a one function, whatever value we will get. Okay, 2,3, 3,2. Anyways, I wanted to explain you the round function also, but ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है for some reason. For some reason, it should have worked though, but let it be. थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पर 2 ऐड करना है इंस्टेड ऑफ यहाँ पर, ठीक है, और ये x में था, राइट, x इक्वल्स टू दिस and x रिटर्न. So run this.
नाउ आई गॉट इट। ठीक है, तो अभी क्या करा मैंने, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। इसको मैं दो स्टेप में कर देता हूँ, दो स्टेप में y equals to this and here I want y. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, यहाँ तक तो हमारा सेम है। ठीक है, हमने इस फंक्शन को ऐसे कन्वर्ट कर दिया था st डॉट में। तो व्हाट आई हैव डन इज y में इसका जो भी आउटपुट है उसको स्टोर कर लिया एंड नाउ आई हैव सेड y कॉमा 2। अगर मुझे ये दो वेरिएबल, अगर मैं इसको बस y रिटर्न करता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं बस y रिटर्न कर रहा हूँ। तो व्हाट आई विल गेट 2.666666। ठीक है, बट आई डोंट वांट दिस ऑल अदर नंबर्स, आई ओनली वांट दिस टू डिजिट्स। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से आई विल से round off whatever the output I get. This round function that we have learned, so it will give me only two digits after. If I want three digits, I will say three. If I want four digits, right? मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली यू विल गेट दिस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। सो दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो एड अनदर फंक्शन। ठीक है, अभी मैं इस पर और फॉलो क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क फॉलो क्वेश्चन, बट ठीक है अभी छोड़ देता हूँ। मूविंग अहेड विथ इस, ये समझ में आया क्या? ये थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया शायद खुद ही समझने में। परसेंटेज टू एफ, परसेंटेज टू एफ, हाँ ये भी वर्क करता है। ठीक है, परसेंटेज टू एफ विल ऑल्सो वर्क। परसेंटेज टू एफ इज अ सिमिलर ऑफ दिस राउंड फंक्शन। देन लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टुडे वी विल गेट and try to understand this lambda function entirely. ठीक है, and also I'm trying to practice you other functions also. So one of the thing is let me just give you जिसमें हम for loop use कर सकते हैं। ठीक है, for loop use कर सकते हैं। For example again I am defining x and lambda। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जाम्पल a। ठीक है, a के बाद वी आर एडिंग कॉलम, राइट, के बाद वी आर एडिंग कॉलम। So for example, what I want to do is I want to pass a list। ठीक है, मुझे एक लिस्ट पास करनी है। अभी तक हम क्या पास कर रहे थे, लाइक एक दो तीन है ना, ऐसे वेरी। नाउ आई वांट टू पास अ लिस्ट जिसमें वैल्यू है 2 3 4। ठीक है, एंड 6। ठीक है, तो आई वांट ए स्क्वायर ऑफ दिस दीज नंबर, इनका नंबर का स्क्वायर चाहिए, जो भी है इनका नंबर का स्क्वायर चाहिए। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, राइट, ए टू द पावर 2, राइट, ए टू द पावर 2, क्योंकि स्क्वायर में हमने यही करा। बट व्हाट विल हैपन, दिस इज नॉट अ सिंगल आइटम, दिस इज आइदर अ सिंगल, दिस इज अ सिंगल आइटम। ए इक्वल्स टू लाइक दिस। अभी क्या है इसका मीनिंग क्या है, ए इक्वल्स टू दिस, दिस एंटायर लिस्ट। ठीक है, ए इक्वल्स टू दिस एंटायर लिस्ट। ठीक है, इक्वल्स टू दिस एंटायर लिस्ट। So if I want to get the square, what I have to do is I have to run a for loop। कैसे लिखूंगा, for I in a। ठीक है, for I in a to the power 2। ठीक है, and if I run this, I will get सबका स्क्वायर। क्या ए का नहीं रहेगा, आई का रहेगा। and I will say print, ठीक है दिख ही नहीं रहा, तो इनका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, आई टू दी पावर 2। क्योंकि हम स्टोर नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज टू डू इट, राइट, कि जब हम लिस्ट सीख रहे थे, दिस इज द लिस्ट।
then I am what I have done is for I in A, for I in A क्या करेगा, this I will check items from the list, ठीक है. Then each item will get squared, हर एक का स्क्वायर निकलेगा, वो स्टोर होगा x में, और फिर x हम रिटर्न मांग रहे हैं, राइट, प्रिंट मांग रहे हैं. Similarly, we can do this because this is also a list. Similarly, this is also a list. So doing this will not solve the problem. So what you have to do is you have to say for I in A, okay, for I in A, so we are again using shorthand function. Okay, for I in A, I to the power 2, okay, for I in A, I to the power 2, इसको मैं डाल देता हूँ एक लिस्ट में. For I in A, I to the power 2. So this is also a way of writing a for loop. हमने ये सीखा था. जो भी ये आउटपुट है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन, उसको सामने डाल दो, ठीक है, और एल्स भी डाल सकते. फॉर लाइक फॉर आई इन लाइक दिस आई टू द पावर 2 फॉर आई में एल्स वॉट एवर यू वांट टू राइट, ठीक है, फॉर वॉट एवर यू वांट टू राइट. So if you run this, you will get square of all the elements, ठीक है, if you will get square of all the elements. ये समझ में आया है किसको? ये समझ में आया ही नहीं आया? If you have got this, type yes. If no, type repeat. जिसको नहीं समझ में आया, type repeat. जिसको नहीं समझ में आया, type repeat. Repeat. So what you have done is, ये समझना जरूरी है. सबसे पहले you need to understand what is for loop. For loop हमने सीखा है already. So this is a list. A नाम से एक लिस्ट है. A नाम से एक लिस्ट है. So what is the objective here? Objective मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. I want to get square of a given list. ठीक है. Squares of square चाहिए, मैं एक लिस्ट देने वाला हूँ. So this is the list that I have given. I want a square. So इंटरव्यूअर क्या बोलेगा? I am giving you a list. ठीक है, उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट का मुझे स्क्वायर निकाल के दे दो. ठीक है, तो जिस तरीके से आउटपुट वो मांगेगा. Then what? How your thinking process should be? You can do this simple for I in a list. ठीक है, so here this A will go check every item and you will say I raised to 2. ठीक है, I to the power 2. तो इससे क्या होगा? हर एक I का मुझे स्क्वायर मिल जाएगा एंड यू विल बी रिटर्निंग. तो ये तो बहुत आसानी से तुम कर लोगे, लेकिन इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये नूब है. ठीक है, दिस इज अ नूब कोडिंग. This is a noob coding. This coding is called as noob coding. But when you will, instead of writing this, when you will write like this, जिसमें क्या किया तुमने? X as in वेरिएबल ले लिया. ठीक है, यहाँ पर देखो X as in वेरिएबल ले लिया. Then lambda A में क्या है? Your entire list. ठीक है, A में क्या है? Your entire list. This is your entire list. इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो शायद. A में क्या है? Your entire list. ऐसा लिखना is not right. So this is your entire A. And now since this is a list, you have to like, अगर हर एक आइटम का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, तो what you will say for I in A. देखो, for I in A, I raised to 2, I to the power 2, I to the power 2. और मैंने बस इसको लिस्ट में ऐड कर दिया है. ठीक है, लिस्ट में कर दिया. You can also simply say like this. और ज़्यादा प्रो लिखना है. दिस इज अ प्रो कोडिंग, राइट? प्रो कोडिंग जिसमें इंटरव्यूअर विल बी लाइक, भाई इसको आता है, इसको आता है. ठीक है, तो व्हाट एल्स यू कैन से एक बी नाम से लिस्ट ले लिया और उसको एम्प्टी कर दिया. ठीक है, एक बी नाम से लिस्ट ले लिया, उसको एम्प्टी कर दिया और उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया बी डॉट अपेंड. ठीक है, बी डॉट अपेंड. तो जो भी आउटपुट आएगा यहाँ पर, वो अपेंड हो जाएगा बी लिस्ट में. एंड देन व्हेन यू आस्क फॉर बी लिस्ट, मेरे को बी लिस्ट चाहिए, रन दिस,
you'll get B list. Okay. So what you are doing? You are doing append job also. Okay. Append job also. So this is how you can play. So I am just playing around with the code, guys. Okay. I am just playing around the code. Lambda function तो हमको सबको समझ आ चुका है. What is the lambda function? बस एक वेरिएबल लेना है. उसके बाद lambda function है. यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स है. यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन है. So this expression will always change according to your need. ठीक है. And यहाँ पर उसका calling है, function call. सिंपल है. बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, यू कैन, तो अगर जिसने ये सीखा है, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो. द सेम एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. if I run this and ask this, like this, I to the power 2 for I in a. ठीक है. So if I add this here, if I run this, I will get the same answer. Yeah, I will get the same answer. तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा और बस यहाँ पर एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया. सो वी हैव लर्न दिस लिस्ट कॉम्प्रेशन. व्हाट वी कॉल, इसको कहा जाता है लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन. तो वी हैव लर्न दिस. एक लिस्ट कॉम्प्रेशन देखा था हमने एंड एक हमने डिक्शनरी कॉम्प्रेहेंशन देखा था. कॉम्प्रेहेंशन. ठीक है. डिक्शनरी कॉम्प्रेहेंशन. तो इसका मतलब क्या होता है? तो वट एवर लूप्स यू आर राइटिंग, इसको बस शॉर्ट हैंड में या छोटे से कोड में कैसे लिख सकते हैं. ठीक है. वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर. लिस्ट कॉम्प्रेशन का यही एक सेम एग्जांपल. इसमें हम लिख सकते हैं एल्स एरर. ठीक है. एल्स एरर ऐसे कुछ लिख दिया मैंने. तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ आई टू द पावर 2 फॉर आई इन ए एल्स एल्स एरर. ठीक है. एल्स एरर. So this and this is entirely same. This and this entirely same. यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है. That is, was not closed. Closed वगैरह गई. Let me just find some error. ठीक है. So is instance कर दिया इसने. Anyways, we don't want it. But basically you can write something like it. ठीक है. Something like it. जिसमें error भी you can add. ठीक है. Else also you can add. Since this is a instance, तो अलग ही डायरेक्शन में चलेगा. Anyways, so list comprehension you must understand. So to revise this, you need to go in this file 1.18.1. So this is also available on, मैंने push कर रहा है GitHub repository में. ठीक है. So you need to practice this one. इसके अंदर you will find the code, and for videos you need to visit this channel. And every day we are uploading courses, right? Every day is lectures. So in this topic, in the dictionary, you will get the list comprehension. ठीक है. Dictionary comprehension. Okay. So last question, let me just give you so that mm, you may understand this. So एक if and else का ही लेता हूँ. ठीक है. Somewhat if and else का ही लेता हूँ. So just tell me whether how it will, like how you can convert this into a lambda function. ठीक है. एक list का ही देता हूँ. Sorry, if and else का ही देता हूँ. So for example, I am saying a equals to, for example, 3 and b equals to 4. Okay. I am saying if a if a is greater than b, okay, if a is greater than b, print
ए इज ग्रेटर, ठीक है, ए इज ग्रेटर, एल्स एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर, ठीक है, बी इज ग्रेटर। इफ I run this, we will get output as b is greater, right? इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल प्रिंट ए इज ग्रेटर, ठीक है, प्रिंट ए इज ग्रेटर व्हेन, कब, जब इफ ए इज ग्रेटर देन बी, राइट? एल्स प्रिंट एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर, ठीक है, एल्स। So this is a short expression, ठीक है? If I run this, I should get same output. यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला था, ठीक है, क्या है, जो एक्सप्रेशन है, जो फर्स्ट इफ के अंदर का जो है, फर्स्ट इफ के अंदर का जो है, आई हैव रिटन राइट फर्स्ट, देन इफ ए इज, देन एल्स। So now try to convert this into lambda function, ठीक है, lambda function. Let's quickly do that. Type in the comments like इस चीज को मैं कैसे लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्वेश्चन क्या रहेगा इंटरव्यूअर से? क्वेश्चन रहेगा फाइंड ए फाइंड ए ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो अभी ये तो नूब कोडिंग होगा, राइट? दिस इज कॉल्ड एज नूब कोडिंग। अगर ये कोडिंग करोगे तो वो बोलेगा रहने दो भाई, ठीक है, व्हाट यू हैव डन, टेकन अ टू नंबर, देन इफ एल्स चला दिया, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दैट वी वांट टू बिकम अ प्रो कोडर। तो प्रो कोडर क्या करेगा? प्रो कोडर अलग तरीके से कोड लिखेगा। इट विल आइदर राइट अ डेफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन कैसे लिखेगा वो? डेफ गेट ए गेट ग्रेटर ग्रेटर नंबर, ठीक है, and it will pass two variables जिसमें it will say कि if a is b, if a is greater than b, ठीक है, if a is greater than b, return a, ठीक है, else else return b, okay, and then it will call that function, okay, get a greater number and it will pass two numbers, okay, and if that is n, then the larger number will get returned, ठीक है। ये थोड़ा हो गया प्रो लेवल प्लस वन, ठीक है, प्रो लेवल लेवल प्रो लेवल प्रो कोडर लेवल वन बोल देंगे इसको, ठीक है, लेवल वन। अभी व्हाट इज लेवल टू? ये कर रहे हैं क्या? कोई सॉल्व कर रहा है क्या? लैम्डा में कैसे करेंगे? हाउ वी कैन डू इट इन द लैम्डा गाइस? प्रो कोडर लेवल टू में कैसे करेंगे ये? दैट इज द क्वेश्चन। इस चीज को इस चीज को कैसे करेंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, सिंपल है। अभी नाउ हाउ वी कैन डू इट इन द लैम्डा, हाउ वी कैन डू इट इन द लैम्डा। लेट मी जस्ट जूम down a little bit for you to have, ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, नूब नूब कोडिंग। Try to write answer in the comments, please. Okay. So you have 2 minutes maybe, इसको क्लोज कर देंगे इसके बाद, ठीक है। So this is your expression, this is your expression, try to use it in the lambda function. One more minute.
आपको बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। व्हाट इज द थिंग इज दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑलरेडी, सो यू ऑलरेडी नो द एक्सप्रेशन, ठीक है। सो टाइम इज अप, किसी ने करा है नहीं करा है, नहीं करा है, ओके नो वरी। सो आई हैव टेकन यू इन द रिवीजन, पकड़ लो, ठीक है। सो दोज हु हैव, जिसमें हमने इफ एंड एल्स स्टेटमेंट सीखा था, ठीक है। अगेन दिस इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में अभी थोड़ा टाइम लेगा शायद, ठीक है। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में हमने यही चीजें सीखी थी, राइट। ए ग्रेटर नंबर का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। दिस वन, this is nothing but exactly the same. A is if A is greater than B, print A is greater than B. Else print B is greater than A. कुछ इस तरीके से that we have done, ठीक है। entirely same. This was the code. इसको हमने शॉर्ट हैंड में लिखना सीखा है। somewhere you will get the notes in the same file, ठीक है। कुछ इस तरीके से if you want you will get somewhere here, ये देखो, print A is greater than B if A is greater, else print B is greater than A, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसको लिखना सीखा है। तो you have to practice the old session, ठीक है। तो इस चीज को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। now I will just copy this, ठीक है। अब ये प्रो कोडर एक डेफिनेशन, ये तो हमने सीखा है, राइट। डिफाइन अ फंक्शन, देन यहाँ पर कुछ ऐड कर दो या फिर डायरेक्टली एक्सप्रेशन यहाँ पर ऐड कर दो। अगर इस कोड में से मुझे लैम्डा बनाना है या अबव कोड में से मुझे करना है, so what I will say x equals to lambda, ठीक है। so what two variables are here, a and b, ठीक है। a and b two variables are here, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो a and b two variables are here, so what I will say, कहाँ पे गया मेरा प्रो कोड, a b, ठीक है। एंड आई विल सिंपली पेस्ट दिस, क्या कर लूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। प्रिंट a is greater than b if a is greater than, else b is greater than, b is greater, ठीक है। and I will pass values like 4, 5. Yeah, if I run this, I will get b is greater. Okay. This is how simple it was. ठीक है, this is how simple it was. बस यहाँ पर क्या है, you have to use a short handed expressions, ठीक है। short handed मतलब क्या है, मैं इसको entirely इसको copy paste नहीं कर सकता यहाँ पर, I cannot copy paste here. So the day we learn these short handed expression यहाँ पर हो गया है ना, या फिर लिस्ट में या डिक्शनरी में कहीं पे ये वाले हो गए जो मैं अभी पढ़ा रहा था, दिस दीज वन। So the day we learn this, we learn for this lambda function only, because lambda function में ही वो यूज होंगे, ठीक है। So this is a pro level 2, yeah, this is a level pro 2, pro level, ठीक है, pro coding level 2। सिंपल है, लाइक दीज ऑल आर सिंपल थिंग्स, बट थोड़ा सा अलग अलग ट्विस्ट कर करके सिखाया गया है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपल, जिसमें ए एंड बी डिफाइन करा है, फिर वी हैव सेड इफ, फिर ये कंडीशन दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर नहीं होगा तो अपने आप ये प्रिंट हो जाएगा। इसी को ही मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि प्रिंट ए इज ग्रेटर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। दिस इज लाइक लाइक टॉकिंग, ठीक है, कि प्रिंट कर दो ये अगर कुछ ऐसा रहा, अदरवाइज कुछ ये प्रिंट कर दो, ठीक है। कुछ सिमिलरली ये प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस, मेक श्योर यू चेक आउट इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अदरवाइज देन इसी को ही मैंने एक फंक्शन में डिफाइन कर दिया कि डेफ ग्रेटर नंबर, गेट अ ग्रेटर नंबर ए कॉमा बी कर दिया, और सिंपली इसको जो एक्सप्रेशन था दिस वन ये यहाँ पर डाल दिया। I can also add this one here. Like अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, right? Instead of this one, just adding this one. Okay, कुछ इस तरीके से can write, ठीक है। इसको भी रन कर दूंगा, सेम आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा फंक्शन यूज करके a x equals to lambda a comma b, then your expression and just calling, ठीक है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट, इससे तो सिंपल है कि डिफाइन करो
है ना, इधर डिफाइन करने की जरूरत नहीं, देन एक्सप्रेशन लिखो, देन कुछ रिटर्न करो, है ना, इधर रिटर्न करने की जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज इट, ऑलरेडी 9:22 वी आर ओवर टाइम। तो आई होप लाइक समवट वी गॉट दिस, इतना तो समझ में आ गया है कि सिंपल लेवल पे कि दिस इज द दिस इज द सिंटैक्स जिसमें वी specify lambda then argument then some expression, ठीक है, lambda then argument some expression then call it, ठीक है। So I am trying to make you like give you some more hard examples कि जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। One example, one homework that I am giving you, one homework that I am giving you, ठीक है। अरे तो होमवर्क में दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन एंड आई एम सेइंग मल एज इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मुझे 4,9 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है, 4,9 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो ये तो दे देगा। 4,9 का मल्टीप्लिकेशन 45 होता है, तो इसको कन्वर्ट इट इनटू लैम्डा, कन्वर्ट बिलो फंक्शन इनटू लैम्डा फंक्शन, फंक्शन, ठीक है, लैम्डा फंक्शन। और होमवर्क में ये सारी चीजें प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, मेक श्योर यू ड्रॉप इट इन द ग्रुप, ड्रॉप इट इन द ग्रुप। यहाँ से चीजें थोड़ी सी लाइक जितना भी हमने पीछे सीखा है दैट वी विल बी गोइंग टू यूज, ठीक है, दैट वी विल बी गोइंग टू यूज। सो ट्राई टू सॉल्व दिस, इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर दो एंड ट्राई टू रिवाइज दिस, टुमारो आल्सो वी विल रिवाइज, ठीक है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, टाइप योर क्वेश्चन, और like if you want to understand anything, let me know, or if you have understood most of the things, type win in the comments so that we can close today's class. If you have understood most of the things, so ये चीजें you need to practice guys, these things that you need to practice daily, daily you need to practice guys, okay. Make sure you do the homework, make sure you do the homework. If there is a question, let me know. अरे भाई इतना जल्दी मत करो, ठीक है, दिस इज द राइट वन, ठीक है, दिस इज द राइट वन। So if you understood this one, like ये चीजें if you understood, ठीक है, you can make these things complex। कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स करोगे, जैसे जैसे यू कैन लाइक अगर ये पता है तो दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स, मैं और भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दे सकता है लाइक दिस, है ना, नॉट, ये भी इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसके अंदर बस ये फॉर्मूला है, ठीक है? इसके अंदर बस ये एक फॉर्मूला है, जैसे ये मल पे चले जाएगा, ठीक है, इसको कल सीखेंगे। एनीवे, so you can make it much complex whatever you feel like, ठीक है। So try to complete the homework for different numbers, practice this, practice all the cells, ठीक है। And if you understood, or type win guys so that we can close to the session, type win in the comments so that we can close to the session, go check out, मैं ग्रुप में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, टुडेज रिकॉर्डिंग का, ठीक है। ऑलराइट, मिलते हैं कल, तक है, बाय बाय। और प्रैक्टिस मोर गाइस, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से होगा, योगा से नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा।